concepts, terminologies, contexts, its use and its significance in the philosophy and also for the sake of examination कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कौन सा कम। आपको फुल प्रूफ कॉम्प्रहेंसिव नोट्स मिलते हैं मेरी तरफ से एंड आई बेट कि उसके बाहर का कुछ नहीं पढ़ना है, ना कोई किताब खरीदनी है, ना कुछ करना है। Comprehensive notes, one-stop solution. We will assist you to follow, understand, revise, remember and write. In addition to that, we also have come up with these three things. Live answer writing discussions, dedicated test series and one-to-one mentorship. Specific अगर आपकी डिमांड है जैसे आपको live answer writing and test series लेनी है along with the base, so you'll go for the pro. And some of you actually want mentorship also, then you can go with the prime. This is like a flexible model from our side. It's my duty basically to communicate to you कि कुछ है इसमें नया as a structure. Hello students, myself Vishwajeet Yadav. I am 2013 batch I&AS officer and now the faculty of philosophy optional at Sarrthi IAS. We are coming up with the new course, foundation course, aimed at 2027 obviously. First lecture that we are starting on is with on 29th of August, that is the Saturday. Okay, so I just came here to kind of brief you as to how the course is and what are the provisions and other things. Okay, so let's start. First of all, the class language is generally mixed. Hindi में भी होती है English, so that you understand, but obviously the medium of examination and the class notes is purely in English. ठीक है, so वो एक important point है. Now, what are the methodology that we are coming up with? See, normally when we see any optional and all the more for the philosophy, there are these 4 steps that you should do. ठीक है, first you have to have proper understanding the concepts, terminologies, contexts, its use and its significance in the philosophy and also for the sake of examination कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कौन सा कम। ठीक है, तो वो और conceptual clarity, तो ये क्लास में आपका परफेक्टली हो जाएगा। ठीक, सेकंड होता है रिवीजन। रिवीजन के लिए आपके नोट्स होने चाहिए। ठीक है, आपको फुल प्रूफ कॉम्प्रहेंसिव नोट्स मिलते हैं मेरी तरफ से एंड आई ऑलवेज से दिस, आई बेट कि उसके बाहर का कुछ नहीं पढ़ना है, ना कोई किताब खरीदनी है, ना कुछ करना है। कॉम्प्रहेंसिव नोट्स, वन स्टॉप सॉल्यूशन। ठीक है, फिर उसके बाद उसके ऊपर आप रिवाइज वगैरह करेंगे, अपने नोट्स बनाते। फिर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एज यू ऑलरेडी नो, है ना। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हैज बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन ऑप्शनल एंड फिलोसॉफी में तो है ही, बिकॉज फिलोसॉफी में लिमिटेड क्वेश्चंस हैं, लिमिटेड टॉपिक्स हैं, तो उसी को बार बार लिखेंगे तो टॉपिक्स ही रिवाइज होते हैं, क्वेश्चंस रिवाइज होते हैं, वर्बेटम क्वेश्चंस भी रिवाइज हुए हैं। ठीक, एंड देन वी ऑल्सो have included some kind of revision cycles as a part of this methodology in which I'll guide or I'll make sure that you revise. In fact, if you see, आप जब देखेंगे नोट्स भी ऐसे बनाए हैं जिसमें some important aspects are repeated in the notes itself, okay, in such a way that it becomes a kind of an auto revision for you. You might be reading it once, but वो इतनी बार आया है टॉपिक थोड़ा अलग अलग कंटेक्स्ट में, तो वो रिवाइज हो जाता है आपके लिए। ठीक है, तो वो भी हमने थोड़ा ध्यान रखा है, तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट दैट वन नीड टू फॉलो। सो take away from this is what is the methodology that you should follow and that we are following already, and we will assist you to follow, understand, revise, remember and write. ठीक है, understand, revise, remember and write. Understand classroom, revise the reading of the handouts, remember making your short notes and write. That's all. Understand, रिवाइज, रिमेंबर एंड राइट। ठीक है, और वही यहां पे हम करेंगे। कुछ प्रोविजंस हैं, क्या क्या हम देंगे, क्या क्या फीचर्स हैं वो देखेंगे। एक तो लाइव लेक्चर्स, ऑब्वियसली यू कैन लाइव एंड यू कैन अटेंड लाइव, एंड as if you can get a chance to talk to the old students, they'll know I like and love people and request people to join live more and more
numbers, because it helps them also, it helped me also. It is more, philosophy, you know how it works, you know, it's always dialogue, like Plato's dialogue. Okay, then you'll get the material, and now I'm saying it high quality, but the moment you'll get it in your hand and you'll start reading, you'll realize no need to, no need from my side to tell you anything more at this point of time. Conceptual clarity emphasis, again, you can also get some idea if you can see some of the lectures that we have uploaded online, kind of a demo if you want, you'll get an idea what emphasis on conceptual clarity means. That's, I consider, kind of my forte. Okay. Then PYQ analysis and discussions. Now this happens not as a separate session, but जैसे जैसे क्वेश्चंस आते हैं, सॉरी टॉपिक्स हम डिस्कस करते हैं, उस पर वो डिस्कस होता है कि इसमें ये क्वेश्चन आया था, इसमें ये इस तरीके के आंसर लिख सकते हैं, वो सब चीज, ठीक है. एंड मोस्ट ऑफ दी PYQs प्रॉपर आपको होमवर्क के लिए दे के, जैसे इसमें है लाइव आंसर राइटिंग वगैरह में, उसमें भी वो PYQs हम इंटीग्रेट करते हैं. ऑब्वियसली मॉडल आंसर तो मिलते ही है, फिर जो भी आंसर आपकी तरफ से आप लिखेंगे उसका मॉडल आंसर मेरी तरफ से आपको मिलेगा, ऐसा, ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस. डाउट क्लियरिंग वो तो रेगुलर बेसिस पे भी होता है, जूम सेशंस भी होते हैं, ठीक है, वो तो रेगुलरली होता ही है. सो सी दीज 5 जनरली आर लाइक, यू नो, bare minimum thing that being a teacher I am responsible you to give. But in addition to that, we also have come up with these 3 things: live answer writing discussions, dedicated test series, and one-to-one mentorship. These are additional features. These are not some verbal promises. They are part of the model. Okay, live answer writing session, they are separate sessions from our foundation course, foundation lectures. Dedicated test series means it is a proper test series like any other test series. Okay, there will be tests, there will be discussions, there will be evaluation, everything. Okay, and it will have sectional tests, it will have full length tests. Okay, here no PYQ, all new questions will be asked. Here most of the practice questions we will, obviously best possible thing is to rely on PYQs. And this is also one-to-one, not, again, it's not some general promise. Let me be very clear again, clear to you, it is a proper systemic arrangement. ठीक है, प्रॉपर अलॉट होंगे सेशंस, टाइमिंग फिक्स होगा तभी सेशंस होंगे. ओके, सो ये कोई सिर्फ वो नहीं कि हाँ कर लेंगे, ऐसा नहीं है, प्रॉपर उसके लिए अरेंजमेंट होगा. सेम इज द केस विद टेस्ट सीरीज. टेस्ट सीरीज तो ऑब्वियसली, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सम टेस्ट सीरीज एज इन हाँ हम टेस्ट ले लेंगे, वैसी नहीं. इट्स अ प्रॉपर टेस्ट सीरीज, टेस्ट होंगे, इवेल्यूशन होगा, मॉडल आंसर होगा, सब होगा उसमें, ठीक है. एंड लाइव आंसर राइटिंग अलग से सेशंस होंगे, नॉट द सेशन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट विद रिस्पेक्ट टू योर फाउंडेशन के जो लेक्चर्स होंगे, उसके अलावा भी सेशंस होंगे, ठीक है. तो ये 3 आई वांटेड यू टू एक्चुअली know properly and register कि ये क्या चीज है. ओके, ऑनेस्टली आई ऑल्सो अंडरस्टैंड यू. ये जो 5 पहले हमने बताया, वो लगता है कि हाँ ठीक है, वो तो चलो सब दे रहे हैं टाइप्स, यू नो, सब दे रहे हैं तो मतलब एटलीस्ट प्रॉमिस तो करना है, और हम तो देते ही हैं, आस्क एनी ऑफ द स्टूडेंट्स. बट दीज आर नॉट जस्ट प्रॉमिसेस, दीज आर प्रॉपर स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट्स. कैसे, ये देखो इधर. इसलिए क्या किया फिर हमने, फाउंडेशन के भी 3 वेरिएंट्स बनाए. एक है बेस वेरिएंट, जिसमें जो हम नॉर्मली जितने भी चीज होते हैं, लेक्चर है, पीडीएफ मटेरियल है, डाउट क्लियरिंग है, PYQ डिस्कशन है, ये सब यहां तक हो जाएगा. लेकिन स्पेसिफिक अगर आपकी डिमांड है, जैसे आपको लाइव आंसर राइटिंग एंड टेस्ट सीरीज लेनी है along with the base, so you'll go for the pro. And some of you actually want mentorship also, then you can go with the prime. ठीक है, so this is like a flexible model from our side for you to choose a bit among. आपको मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मुझे ये चाहिए था, ये नहीं मिल रहा है. And some people may not need maybe live answer writing, some people may not need mentoring, but some people would need it. So इसके हिसाब से थोड़ी सी flexibility भी आ जाएगी, ठीक है, आपको भी थोड़ा टेलर मेड चीजें मिलेंगी. एंड अगेन एज आई मेंशन इन द लास्ट स्लाइड, ये जो 3 चीजें हैं, ये सिर्फ वर्बल प्रॉमिस नहीं है, ये प्रॉपर स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट्स है. मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज आई एम प्रिटी श्योर कि ये चीजें ऑटोमेटिकली किसी फिलोसॉफी फाउंडेशन में आपको नहीं मिली है, जितना मेरा जानकारी है. तो इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यू नो इट्स माई ड्यूटी बेसिकली टू कम्युनिकेट टू यू कि कुछ है इसमें नया,
एज अ स्ट्रक्चर, ठीक है, नॉट जस्ट एज अ उसको बोलते हैं ना जो हम ये कर देंगे वैसा नहीं, ठीक. सो दिस बेसिकली आई वांटेड टू come to you for the like brief introduction to you. Okay, if you have any further questions, if you want some further details, you can certainly contact Sarrthi IAS. These are the numbers, okay. These are the emails, and certainly I think mobile number is better. You can immediately get your information from the Sarrthi IAS, whatever you want, from whatever information that you want from us or from administration. क्योंकि थोड़ा नया मॉडल है तो इट्स ऑलवेज बेटर फॉर यू टू इंक्वायर एज टू हाउ इट विल बी टेकन इट फॉरवर्ड, हाउ इट विल बी इम्प्लीमेंटेड, मतलब शेड्यूल वाइज वो कैसे मैनेज होगा. ऑब्वियसली वी हैव डन ऑल दी थिंग्स बट background work, but if you want more information, certainly you can contact the reception. Okay, and again going back to the first slide, just again reminding you, the first lecture is on 29th of August, in which we will be having the lecture on orientation with philosophy optional, orientation with philosophy, and then after that we will start with the first lecture. Okay, so thank you very much. Again, if you have any further doubt, you can visit us. Okay, and I certainly hope that those who are watching, and most of you, if not all, get use of this course by enrolling it. Thank you very much.